सो द ब्यूटी ऑफ अ डिजिटल ब्रांड इज सब कुछ टेस्ट कर सकते हो आप और खर्चा कुछ नहीं है, या तो 200-500 रुपये खर्चा या जीरो है. Because D2C is one of those places where it is absolutely possible to build a bootstrap brand. बट यदि कोई पिलग्रिम के सारे मैन्युफैक्चरर्स पे जाके सेम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके और ब्रांड नेम चेंज करके बेच ले, then we have not done a good enough job on the brand. Then we don't have the right to exist as a brand. I'm with you. That is precisely what we are offering to the Indian consumers. International beauty at India-friendly prices is what we say. Let's say it's 2019 and you give yourself a goal of building a 15 crore monthly revenue business in the world of D2C in 3 years. Which categories would you choose? Mobile accessories and smartwatches. We've seen Noise and Boat become large and successful businesses. Or maybe food and beverage. We have Vadam, Happylo, Licious, all building large brands with crores in revenue. But it'll be very hard to ignore the beauty and personal care industry. We've seen large D2C brands being built in this market. The market is estimated to be about $25 billion, $30 billion, depending on what market research report that you read. Directionally, this market is going to be huge. We are a population of 1.3, 1.4 billion people. All of us are potential target customers for some beauty and personal care products. So this market is going to be a large market. Oftentimes though, when people think about large markets and large brands, their first response is, this market is already captured. It'll be very hard for a new entrant to make a mark. The reality is, large markets will always have large incumbents. But that does not mean a new brand will not be able to build a sustainable, profitable business. The thing is, consumer preferences are evolving, and they're evolving faster than ever in this world of hyper-connectedness with social media, smartphones, and whatnot. So, when consumer preferences evolve, large brands find it hard to cater to this market because they start out as very small niche markets. On the other hand, small D2C brands focus on this growing niche, and they take a bet on the fact that this market segment is going to explode over a period of time. One such brand is Pilgrim, a beauty and personal care brand that found an interesting niche in this market back in 2019, and since then, they have scaled to a 15 crore monthly revenue business or 180 crores annually. Pretty impressive if you think about the fact that they've raised a total of 16 crores over the last 3 years. This episode is a D2C masterclass by the founder Anurag Kedia. He's an IIT Bombay and IIM Ahmedabad alumni with 20 years of experience in the world of beauty and wellness. 3 years back, he decided to take a plunge and start his own company, which was called Pilgrim. In this episode, he very candidly shares his unique insights that have come from building Pilgrim. We start by understanding the core pillars that are needed to build a successful brand, and then we go deep into what it takes to build a brand in today's digital world. Right from marketing to retention to scaling teams and even product development and working with contract manufacturers, Anurag has opened the entire playbook that helped Pilgrim scale over the last 3 years. And if you want more deep dives of certain D2C brands, leave a comment and I'll try to get them on the podcast. With that, we jump into the conversation with Anurag, trying to understand the key pillars of building a successful D2C brands. In 3, 2, 1, let's go. Anurag, welcome to the Indian Dream podcast. I'm extremely excited to have this conversation with you. Before we talk about Pilgrim, your journey, what I want to understand, this is a question that has been in my head whenever I talk to D2C founders, is when you are moving and starting a D2C brand, especially in your case where you were doing services before this, right? When you start a D2C brand, what are some of the core pillars that you need to build a D2C brand, be either in competencies in terms of founding team members, product, all of that? Give us a sort of 360-degree view of what does it take to take off a D2C brand. Hi Siddharth, thanks for having me and very happy to be speaking with you. I think very interesting question you have started off with. So my belief is that there are 3 critical things to build a D2C brand, and somebody recently pointed out a 4th one to me as a bonus, which also I will share, and that somebody is a very senior person. I'll share the name later. So the 3 pillars of building any new age brand or a D2C brand as we call it now. One is domain or product understanding. So in our case, because we are in the field of beauty, somebody in the founding or the leadership team really needs to understand how beauty products work, how formulations work, what is it that it takes technically, scientifically, commercially to make it a product which is loved by consumers. The second is growth hacking. And this is a capability which I have normally found very strong across D2C brands. Typically D2C founders have come from technical backgrounds. Many of them have been engineers. If they have not been engineers, they've worked with, other digital marketing agencies, other places where they've learned growth hacking well.
So this is a place where I normally don't see D2C founders go wrong. And the third is brand building capabilities. And so brand building capabilities would mean understanding how the product is different. So first pillar we said is the quality of product itself. But the third is how does the brand differentiate itself from the other brands in the market. So, in our case, if it's a beauty brand, at the product front, there is a differentiation, but at the brand front, what is the additional differentiation and what are the emotional benefits which the brand can offer to consumers? If you are a food brand, I see a lot of health food startups now in the D2C space. So if you are also selling one more granola bar, muesli, how is your muesli or how your granola bar is different from what is already available in the market? Because the claims at the product front might look very similar. So these are the three critical pillars to my mind. And the bonus point, which, the founder of Carrot Lane, Mithun, I met him recently somewhere, and I shared my thesis with him. He said, I agree with the three pillars, but there is a fourth pillar he wanted to add. And he said cash flows. He said a lot of founders he has met understand P&L and balance sheets well, but people often lose sight of cash flow. He said more than P&L, management of cash flow is very critical throughout the life journey, throughout the life cycle of a business. And hence now it is 3+1 for me. Earlier it was 3. Because when somebody like Mithun tells you something as important, you want to kind of hold it very closely to your heart. Yeah, I think the cash flow part, especially because it's very hard to understand that you might have very healthy gross margins, you might be selling, but if you're, a lot of money is stuck in inventory, you need that cash flow to actually rotate very fast in order to build a sustaining business. Also, in terms of growth hacking, oftentimes when you talk about D2C brands, the only thing that comes to mind, is when you talk to a lot of these young founders is I need money to spend on Facebook, Instagram, a lot of these ad platforms. Is that it when it comes to growth hacking, or can you just double click on that? Yeah. So Siddharth, D2C earlier was when you were selling only from the website. Most brands today have the opportunity to use a lot of different channel partners in the online space. So in our case, it is Amazon, Flipkart, Nykaa, Myntra, Purple, Smitten, and quick commerce now we are starting. Blinkit is emerging well. Big Basket is there. We are not on Zepto and Instamart yet. Each of these platforms have been built slightly differently. And what will work on Amazon does not work on Flipkart and vice versa. So growth hacking is not limited to, what you are doing on the website, what you are doing on Facebook or Google, but it is also on in terms of how do you get Amazon right and how do you get Flipkart right? How do you really make marketplaces work for you, irrespective of how much capital you have available with you to spend on the platforms. A lot of these platforms have a lot of tools which don't need money necessarily. You can spend money, but there are other ways of growing on the platform. And I'll give you some examples to make it a little more tangible and relatable. So, for example, Amazon has this beautiful concept of flywheel, and now I see large listed companies talk about flywheel of growth. So one starts with the product listing itself. When you search for a particular product, a set of products are going to show up on Amazon or Flipkart or any other channel partner you're working with. The first image is very critical. In the early days, many a times the first image, you're doing a mock-up or the photo quality is not great. Now with so many photo apps being available, can you really do something interesting on the first image? Amazon has this very, very strict policy about a white background image, but other channel partners like Myntra, like Nykaa allow you to do some experimentation there and break the clutter. So in beauty, we are able to show textures. We are able to show a nice background. Now that can really help us stand apart even before the consumer has clicked on the product page, right? So that is growth hacking to my mind. Once you have clicked on the product image and you have gone on to a product page, what is typically called as a PDP, the 5 or 6 or 8 PDPs, carousel images which are there. Each of those carousel images can do the job of storytelling for the product and for the brand and help the consumer make the choice of buying into the product and the brand. Are we helping the consumer make that choice easy, or are we, just repeating the same information again and again laid out in a bland manner? Another point of differentiation, and again, while you can call it brand aesthetics, but that is growth hacking to my mind. A certain level of SEO works on each of these platforms. So which are the keywords you are really trying to optimize for?
for each of your products, and it could be a different set of products, a different set of keywords for each of your products. It sometimes so happens that what gets optimized on Amazon may not get optimized for Flipkart, and what gets optimized on Flipkart doesn't get optimized on Amazon. While we use typically Amazon to drive out a lot of data insights, because a lot of tools are available on Amazon, both within the Amazon ecosystem, which Amazon gives you, like brand analytics, Amazon Pie, etc., and some external tools like Helium 10, Jungle Scout. These are very commonly available. In case any founders listening into this podcast and they have not come across these tools, I really encourage them to learn these tools and master Amazon, because the kind of data insights which Amazon gives you, it will help you crack open the doors of other channels where so much data may not be easily available, and you will have to depend on the category teams to support you with data. Yeah, I think, and a lot of this is, there's no playbook as such, right? There might be a 50-60%, guidelines of how you should be, looking at all these platforms. But a lot of this is iteration based on your product, based on your category, looking at a lot of data, making those iterations, figuring out, what experiments work, what doesn't, and then eventually coming to a sustainable sort of way of, a way of sustaining on these platforms. Yes, Siddharth, you're right. However, I think theory pata hona zaruri hai. And if you go on YouTube and search for how to rank in the top 10 of Amazon, right? How to rank on Flipkart, a lot of videos have been put out by a lot of experts, especially, Amazon.com, not so much .in. .com is a lot more evolved. So what happens in the US takes a few years, few quarters to come to India. So in my early days, I have relied significantly on many of these Amazon gurus, which are giving free gyan on YouTube, and some very, very interesting stuff on, how the Amazon algorithm works really to rank products. And wo know-how use hum kaise kar sakte, because fundamentally, that's the base, that's the core science of how marketplaces have been built. Many other marketplaces have been built using the know-how of Amazon, but they are not as advanced or as evolved. So my fundamental belief is, if you're able to get Amazon right and go really deep into the technical understanding of how the Amazon algorithm works, your understanding of other platforms will come slightly more easy. But other platforms, every platform is unique, and you have to really work on the platform, figure out, make your own trial and error to figure out how to kind of get it right. Like you said, it's a lot of iteration. And for us, it's been a little more than 3 years of journey, and we're still iterating. Interesting. Now I want to rewind back in 2018-19, when you're dabbling with the idea of entering this space, right? This is still a time where FMCG probably dominates the beauty category, right? D2C hasn't, it's there, but online e-commerce, the boom that happened with COVID wasn't there. What was the thesis of finding that white space in the beauty segment? I know you come from this background in terms of, the business that you did prior to that. So if you could shed some light on that, and then finding that white space to enter the segment. Yeah. So Siddharth, I want to first talk about our choice of why beauty sector at all. So, I was running a chain of spas and salons and trichology clinics, and Ayurveda clinics for close to 12 odd years. तो और कुछ आता ही नहीं था. So that is the reality, which is why we chose the sector, right? So many other founders sometimes may not have spent as much time in a particular sector, and hence they will have the liberty to go out and find a co-founder or develop the competence if they're developing from scratch. कि फैशन भी कर सकते हैं, जूते भी बेच सकते हैं, कपड़े भी बेच सकते हैं, ज्वेलरी भी बेच सकते हैं, बिकॉज सारे ही सेक्टर नए हैं. मुझे तो और कोई सेक्टर आता ही नहीं था, पूरा करियर ही ब्यूटी एंड वेलनेस में बिता दिया था मैंने. सो मेरे पास 2 ही चॉइस थे, या तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स या न्यूट्रास्यूटिकल्स, क्योंकि मैंने आयुर्वेदा क्लिनिक्स एंड थोड़े इंटरनल सप्लीमेंट्स वगैरह में काम किया था. So these are the 2 sectors I understood. So 2 में से एक चूज करना था. So and then we started, researching a lot more. So the one benefit I had was, over this 10-12 year journey of building different service formats of spas, salons, Ayurveda clinics, I had spoken to more than 5,000 consumers, which had helped me track the preferences of consumers change over the last 10-12 years. तो कुछ चीजें तो clearly change हो रही थी, वो समझ आ रहा था. Like we realized that this, trend of conscious consumers, right? And conscious consumers is a slightly larger term. There are multiple parts to what a conscious consumer stands for. One is environmentally sustainable products. So ये plastic packaging को लेके 10 साल पहले nobody was caring too much. Today all of a sudden, if you don't, offer plastic neutrality, in our case, we are a plastic positive brand, which means we recycle more plastic than what we consume for our packaging. Consumers will actively, not buy you.
we are PETA certified cruelty free, PETA certified vegan. These were things which are not very often talked about 10 years back, 5 years back, and consumers did not care too much. Clean beauty is another concept which is a part of the conscious consumer concept, which basically means that many toxic ingredients which have been used by beauty brands in the past, consumers are actively looking at the ingredient label and saying, "Yaar, ye kyun use kiya? Ye to kharab hai." And consumers are aware today. So this is what we call as conscious consumers, and this we said is not your right to win. This is the right to play. ये नहीं करोगे तो you can't exist. ये करोगे तो consumers are not going to buy you because this is the starting point really for any new age brand. So this is one. Second, then when we started speaking to consumers, we realized कि India में दो type के brands उस समय चल रहे थे. One, what we call as the haldi, kumkum, roli, chandan category, right? There are a lot of interesting Indian ingredients. Many of them come from Ayurveda. Some of them don't come from Ayurveda, but come from our kitchen ingredients. And there is an overlap. So many of the ingredients which were trending in the Indian market came from our kitchen or came from Ayurveda. And then they started trending online and a lot of brands started copying those ingredients. We said, जैसे India में ये interesting ingredients है, are there other interesting ingredients globally? And then when we started researching, we thought कि यार ये तो Korean beauty का concept बहुत interesting है. And Korea में if you go to Jeju Islands, there is volcanic lava ash from Jeju Islands. There is white lotus camellia, you go from Jeju Islands. You go to France and the concept of red wine, why we know red wine in the context of a beverage, red wine is also very beneficial for skin when you for an application. And we thought this is also interesting. Then we said if you go to Australia, there is kakadu plum and tea tree, which are also very interesting ingredients. Kakadu plum incidentally is like 1,000 times more powerful for vitamin C compared to lemon. And vitamin C was a trending ingredient. So we said different parts of the world are offering something very unique in the context of beauty. Can we bring the best of world's beauty ingredients to the Indian audience? And one, can we bring it? Second, does the consumer care? So we started speaking to consumers saying, yaar, ye international beauty ingredients we aapko la ke de. Are you interested? And this ingredient can do this for you. This ingredient can do this for you. And by the way, this will be a brand which will be a conscious brand. So whatever your value system side will resonate with you. And at the concept stage, we found a lot of traction. Where consumers said, यार ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये तो बताओ कहाँ से खरीद सकते हैं. एंड इंसिडेंटली पिलग्रिम का जो पोजीशनिंग है ग्लोबली किसी भी और ब्रांड का नहीं है. पिलग्रिम के लॉन्च करने के बाद एटलीस्ट हाफ अ डजन ब्रांड्स इन इंडिया विच हैव ट्राइड टू कॉपी द पोजीशनिंग. But otherwise, before Pilgrim, there was no other brand globally which has had this positioning. We were the first brand to take this route of saying world's best beauty ingredients for the Indian consumers. But expensive भी तो होगा compared to the other products that are out there, right? Is that part of your research in figuring out कि वो price point चलेगा कि नहीं चलेगा? Very interesting question, Siddharth. तो आप देखिए कि ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है. तो आप यदि कोरियन ब्यूटी की बात करेंगे तो कोरियन ब्यूटी ब्रांड्स हैव बीन अवेलेबल इन इंडिया. Specifically, I think Nykaa ने काफी काम किया to go and do exclusive tie-ups with many international brands and bring them to India. ये ब्रांड के 3 challenges होते हैं when they come to India. Any international brand when they come to India, one, a brand which is mass premium or mass market internationally, by the time they come to India, they become luxury. Yeah, and you will see this in apparel also, right? And I don't want to take names, but यार $20, $15 बाहर अलग है. इंडिया में $20 बहुत महंगा है. राइट, $10 इंडिया में 800-900 रुपए महंगा है. $15, $20 ये प्राइस पॉइंट्स इन कोरिया कुड बी वेरी अफोर्डेबल, बट इंडिया में 1500 रुपए का फेस वॉश बहुत महंगा है. एंड इसमें इनके पास प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम तो ये है कि इनको प्राइस पैरिटी इन डॉलर टर्म्स मेंटेन करनी ग्लोबली. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट इफ यू सेलिंग अ प्रोडक्ट फॉर $20 इन कोरिया, यू कांट सेल इट फॉर $5 इन इंडिया. राइट, देयर इज अ प्राइसिंग ग्लोबल प्राइस पैरिटी दे नीड टू मेंटेन. सेकेंड, इंडिया में कस्टम ड्यूटीज बहुत हाई हैं, खासकर फ्रेश गुड्स के लिए. एंड आप फार्मा में देखो, हम तो पूरी दुनिया के बना रहे हैं. इंडियन फार्मा कंपनीज आर मेकिंग फॉर द एंटायर वर्ल्ड. तो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, जो सोर्सिंग इकोसिस्टम है, बहुत इवॉल्व है. एंड आई थिंक फार्मा का काफी बेनिफिट ब्यूटी इकोसिस्टम को भी हुआ है. तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, क्यूसी स्टैंडर्ड्स, सोर्सिंग कैपेबिलिटी सब कुछ ऑलरेडी थी. लेकिन जब आप फिनिश्ड गुड्स बाहर से मंगाते हैं तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज लगती है. देयर इज अ प्राइस पैरिटी विच द ग्लोबल ब्रांड्स नीड टू मेंटेन अक्रॉस ज्योग्राफी. दिस इज ऑन द प्राइसिंग फ्रंट. देयर इज अ थर्ड एंगल टू दिस, which is all the global brands typically have been incumbents.
right? Which means they are used to having a monologue with the consumers. तो ये मैं आपको एक थोड़ा सा डिफरेंट, ये इंडियन बड़े ब्रांड्स के साथ भी है. वाई डू D2C ब्रांड्स एग्जिस्ट एट ऑल, राइट? इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, अच्छा काम करते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि बड़े ब्रांड्स अच्छा काम नहीं करते, जो 10 साल 20 साल 30 साल से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, 50 साल से अच्छा काम कर रहे हैं. 2-3 की डिफरेंसेस हैं. वन की डिफरेंस इज दे आर यूज्ड टू एक्टिंग लाइक एक्सपर्ट्स एंड दे विल टेल द कंज्यूमर्स कि कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, राइट? कंज्यूमर्स को नहीं पता क्या क्या चाहिए, मैं बताऊंगा एज अ ब्रांड की क्या चाहिए. इवन दी एड्स जो टारगेटेड होते हैं वो कोई साइंटिस्ट कोई लैब में बैठ के आपको बता रहा है कि ये करना पड़ेगा आपको. करेक्ट, करेक्ट, राइट. वर्सेस जो न्यू एज ब्रांड्स का ट्रेंड है इज अ डायलॉग ट्रेंड. व्हाट डज दिस मीन? वी विल को क्रिएट विद द कंज्यूमर्स एंड कंज्यूमर से ही पूछेंगे आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए, क्या टेक्सचर चाहिए, कैसे फ्रेग्रेंस चाहिए, कैसी पैकेजिंग चाहिए, क्या प्राइस पॉइंट पे चाहिए. व्हेन वी आर डूइंग द कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट प्रोटोटाइप्स हम कंज्यूमर्स को ही भेजेंगे एंड लॉन्च के बाद हम फिर कंज्यूमर्स के पास जाके पूछेंगे कि यार आपका क्या फीडबैक. मेरे को इस पे डबल डाउन करना है थोड़ा, राइट? दैट इंटरेक्शन विद कंज्यूमर्स बोथ फ्रॉम फिगरिंग आउट व्हाट टू बिल्ड टू बना लिया तो अब मेरे को बताओ कैसा है, और फिर पोस्ट परचेज फीडबैक, राइट? हाउ डू यू एग्जीक्यूट दिस ऑन द ग्राउंड? बिकॉज दिस इज नॉट अ B2B सेटअप, राइट? जहां पर आपके 10 बड़े क्लाइंट है, आपने कुछ बनाया, उनसे जाके बात करी, एक कस्टमर सक्सेस मैनेजर 3-4 क्लाइंट को हैंडल करेगा, वो इन्फॉर्मेशन लेके आएगा. यू आर टॉकिंग इन थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ पीपल. ये एग्जीक्यूट कैसे होता है ऑन द ग्राउंड इन टर्म्स ऑफ दैट कस्टमर फीडबैक लूप? सो इसमें दो पार्ट्स हैं सिद्धार्थ, थोड़ा सा थ्योरेटिकल मैं होऊंगा यहाँ पे. सो देर इज अ क्वांटिटेटिव रिसर्च एंगल एंड देर इज अ क्वालिटेटिव रिसर्च एंगल. कुछ चीज़ें हम क्वांट पे रिलाई करते हैं, बट काफ़ी मेरा फंडामेंटल बिलीफ है क्वालिटी रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा. सो जैसे अब क्या हो गया, विद स्केल सम ऑफ दीज थिंग्स बिकम स्लाइटली इजियर बिकॉज हमारी खुद की जो कम्युनिटी है, जो यूजर डेटा है, वो काफ़ी बड़ा होता गया है. जब हम लॉन्च कर रहे थे वी रिलाइड अ लॉट मोर ऑन क्वांट. हम रिसर्च करते थे नॉट बाई टॉकिंग टू कंज्यूमर्स डायरेक्टली बट बाई रिलाइंग ऑन डेटा ऑफ मार्केट प्लेसेस. तो मैं अमेजोन की बात कर रहा था, बहुत सारी सर्च टर्म रिपोर्ट्स आते हैं, बहुत सारा डेटा अमेजोन से मिलता है. वो डेटा हम क्वांट के लिए यूज़ करते थे, उसको यूज़ करके हम कंज्यूमर से बात करते थे कि यार यदि एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए तो आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो अभी. एंड यदि आप 10, 15, 20 भी मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस कर लो, बहुत अच्छे इंसाइट्स निकल के आते हैं किसी भी प्रोडक्ट के बारे में. सो ये ज़रूरी नहीं कि आप 100 कंज्यूमर से बात करो, 500 कंज्यूमर से बात करो, बस 10-20 भी अच्छे अपने कंज्यूमर्स, अच्छे डीप कॉन्वर्सेशंस काम किया यदि आपने बात की. Incidentally, as we speak today, we have a consumer call day and like half of our brand team today is just sitting and making calls to consumers, trying to understand कि वो पिलग्रिम क्यों खरीदते हैं. हमने कुछ सोच के बेचा, बट क्या वो भी वही सोच के खरीद रहे हैं या वो कुछ और रीजन के कारण खरीद रहे हैं. जो पिलग्रिम कंज्यूमर्स नहीं है वो पिलग्रिम क्यों नहीं खरीद रहे हैं, जिन्हें नाम पता है लेकिन वो हमसे खरीद नहीं रहे. जिन्हें नाम ही नहीं पता है वो कौन सा ब्रांड खरीद रहे हैं और क्यों खरीद रहे हैं. So this consumer understanding, you can call it consumer obsession, consumer centricity, whatever term you want to use, ये बहुत important है. And more than numbers, quality is very important. मैं एक दो आपको tangible examples देता हूँ ताकि मैं explain कर पाऊँ कि हमने कैसे यूज़ किया. जैसे अब तो हमें जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, हम इंस्टाग्राम में स्टोरी डाल देते हैं, विच इज़ द नेक्स्ट प्रोडक्ट यू वांट फ्रॉम पिलग्रिम. और इतने क्लियर ट्रेंड्स निकल के आते हैं हमारे कंज्यूमर से दैट हमें सोचना ही नहीं पड़ता. जैसे सनस्क्रीन हमारे पास 8 से 8-9 महीने पहले नहीं था, बट आवर कंज्यूमर्स केप्ट आस्किंग फॉर सनस्क्रीन. देन वन सनस्क्रीन केम कि हमें सनस्क्रीन चाहिए पिलग्रिम से. हमने पूछा कैसा सनस्क्रीन चाहिए, तो उन्होंने हमें सब बता दिया. इस टेक्सचर का चाहिए, इस प्राइस पॉइंट का चाहिए, अभी इस ब्रांड का यूज़ करते हैं, उसमें ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, ये हमारे पेन पॉइंट्स है, ये आप सॉल्व करोगे तो हम पिलग्रिम का सनस्क्रीन खरीदेंगे. ये मैं बहुत ही टैक्टिकल प्रोडक्ट फ्रंट पे बता रहा हूँ. एट द सेम टाइम लेट्स से व्हेन वी आर डूइंग अ पैकेजिंग डिजाइन, मैं आपको और एक दो एग्जांपल देता हूँ. हम पैकेजिंग की भी A/B टेस्टिंग करते हैं. दैट इज द ब्यूटी ऑफ बिल्डिंग अ डिजिटल ब्रांड. पहले यदि मान लीजिए आप एक FMCG कंपनी रन कर रहे थे, आपको एक नई पैकेजिंग लॉन्च करनी है, आप करेंगे कैसे? या तो आप कॉन्सेप्ट कार्ड दिखा दीजिए, या आप 50,000 पीसेस, 1 लाख पीसेस बिल्ड करके मार्केट में डालेंगे. आप A/B कैसे टेस्ट करेंगे कि कौन सी पैकेजिंग बेटर बिकी? मैं आपको एक हैक बताता हूँ जो हम लोग यूज़ करते हैं. आपको प्रोडक्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, पैकेजिंग बनाने की भी ज़रूरत नहीं, केवल एक मॉकअप बनाइए 2 अलग अलग पैकेजिंग कॉन्सेप्ट्स का, जिसमें बाकी कोई डिफरेंस नहीं होगा, खाली पैकेजिंग का डिफरेंस होगा. दोनों का आप मेटा पे या फेसबुक पे ऐड चला दीजिए 500 रुपए डाल के, और सेम कम्युनिकेशन, सेम क्रिएटिव, सब कुछ सेम होगा. आप उसमें CTR देखिए कौन से पैकेजिंग का बेटर CTR है.
कम्युनिकेशन सेम है, सेम ऑडियंस, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। A/B टेस्ट आपको मेटा अलाउ करता, कर दीजिए। यदि किसी में CTR 0.5 आ रहा है और किसी में 2% आ रहा है या 1% आ रहा है, क्लियर है ना कि एक पैकेजिंग ज़्यादा अपील कर रही है कंज्यूमर को। हमें जब पूछना हो तो पता करना होता है कि यार ये सेलेब ब्रांड एंडोर्स कर सकता है कि नहीं। तो बजाय इसके कि हम अपने बायस से देखें, बिकॉज सेलेब्स के बारे में हर किसी का एक बहुत ही अलग ओपिनियन होता है। मुझे कोई सेलेब पसंद है, आपको कोई सेलेब पसंद है, टीम में कोई और सेलेब पसंद है। हम अपने कंज्यूमर्स के पास जाते हैं थैंक यू पेज में, जैसे कि एनपीएस सर्वे रन होता है, हम सेलेब्स का एनपीएस सर्वे रन करते हैं और हम पूछते हैं इफ let's say if Siddharth is the celeb, if Siddharth had to endorse Pilgrim for this category, क्योंकि फेस अलग है, हेयर अलग है, बाथ एंड बॉडी अलग है, हाउ लाइकली आर यू टू purchase Pilgrim looking at the celeb? And it is mind boggling the kind of NPS we are able to measure. हमें नेगेटिव NPS भी आए कुछ celebs के लिए for Pilgrim. That does not mean that the celeb is not good. That celeb may fit well with another brand, but Pilgrim में fit नहीं हो रहा है. So the beauty of a digital brand is सब कुछ टेस्ट कर सकते हो आप और खर्चा कुछ नहीं है. या तो 200-500 रुपए खर्चा है या जीरो है. Correct. And basically, the experimentation mindset needs to be at the organization level, right? क्योंकि इसमें एक कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो एक्सपेरिमेंट करके लॉन्च करता है and everybody follows a playbook. Everybody has to have that experimentation mindset कि करके देखते हैं, लॉन्च करके देखते हैं, what is the response we get, based on which we make bigger plans for it. Coming back to one point that I wanted to confirm. So what you were saying about these ingredients and pharma already being here and manufacturing, I think the key difference that you figured out, even from a brand positioning, that can be a moat of sort, is because this manufacturing was not happening in India. Most of these products were being imported and therefore a much higher price. So the fact that you could manufacture all of these, formulate and manufacture all of this in India, gets you to a price point that is more affordable for the Indian audience. Is that a correct statement? Absolutely. However, price is only one part of the equation, Siddharth. Just because the consumer can afford your product does not mean they will buy your product. Right. I think and everything else you said about बाकी सब packaging से लेके ingredient, all of that has to matter. But the reason why I asked is because anytime somebody hears international beauty ingredients, the first question is going to be, this is going to be very expensive. And if you don't solve for that, then the scale of India is not really tappable, right? Yes. I'm with you. That is precisely what we are offering to the Indian consumers. International beauty at India-friendly prices is what we say. Interesting. We were also chatting before this, where you said when Pilgrim originally launched, while your brand positioning was set ki is tarike se position karna hai brand ko, there were a lot of iterations that you did in the products in finally what Pilgrim is today. What I want is if you could help us understand the brand positioning. I think you sort of hinted at that in terms of the positioning in international ingredients at Indian price. But if there's more to it, please let us know. But also उसके बाद क्या iteration करने पड़े, क्या failures थे along the way to get to this final version of Pilgrim that's scaling well. So brand के बारे में मैं थोड़ा सा एक जो और add करना चाहूँगा सिद्धार्थ, that you must do a lot of research, consumer testing before you launch the brand, because brand pivots are very difficult. And फिर भगवान के ऊपर छोड़ना पड़ता है, because to get the brand right, whether the brand will resonate with the consumers or not is something you figure out only with time. Because कुछ brands early traction दिखाते हैं because unique हैं, differentiated है, but scale नहीं कर पाते हैं. कुछ brands starting में बहुत मुश्किल होती है explain करने में because the positioning is not very simple to articulate. So this is a lot of luck in many aspects of business, but brand में तो बिल्कुल lucky है कि वो finally resonate किया कि नहीं consumers के साथ. But brand के अलावा I think सारी ही चीज़ें हमने बहुत सारे changes किए हैं, and I'll give you examples. जैसे कि प्रोडक्ट फ्रंट पे हमने जो टेक्सचर्स लॉन्च किए थे हमारे फर्स्ट 8-9 प्रोडक्ट्स में, और अब जो टेक्सचर्स हम कर रहे हैं, एंड आई टॉक अबाउट टेक्सचर्स अ लॉट बिकॉज ब्यूटी इज अ सेंसोरियल कैटेगरी, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. हमने जो टेक्सचर शुरू में लॉन्च किए थे थोड़े से थिकर हेवियर टेक्सचर्स थे. विद कोविड व्हाट हैपेंड वाज पीपल वर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इंडोर, so the market moved to very very light textures, very gel like textures. Now gel-based textures are great, but for many skin types, slightly heavier, thicker textures work better. But market वहाँ से move कर गया, consumer preferences changed. So because we were listening to consumers very closely, we were also looking at what was happening nationally and internationally with other brands. We had to make this adjustment on the textures with the newer launches.
राइट. इन टर्म्स ऑफ प्राइस पॉइंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. हमारा जो फर्स्ट हीरो प्रोडक्ट था, सो टू से, वाज आवर विटामिन सी नाइट सीरम. हमारे लॉन्च करने के पहले विटामिन सी सीरम इंडिया में 1,000 रुपए के ऊपर ही बिकता था. और हमने फिगर आउट किया कि यार ये 550 रुपए में प्राइस हो सकता है. एमआरपी हमारा 550 का था. एंड आवर ग्रॉस मार्जिन्स वर स्टिल इंटैक्ट. एंड व्हेन वी डिसाइडेड टू लॉन्च दिस एंड वी बाउंड दिस आइडिया विद अ फ्यू चैनल पार्टनर्स, हमने बोला यार तुम मार्केट खराब कर रहे हो. लोग सोचेंगे कि तुम घटिया प्रोडक्ट दे रहे हो, बिकॉज विटामिन सी तो बहुत महंगा होता है. एंड वो तो 1,000 रुपए में, 1,500 रुपए में लोग बेच रहे. तो तुम यदि सिर्फ 550 में लॉन्च करोगे तो ये या तो बिकेगा नहीं, या बिकेगा भी तो बहुत बैकलैश आएगा. एंड वी वेंट बैक टू आवर मैन्युफैक्चरर सेइंग यार हमारा तो सारा फॉर्मुलेशन ठीक है, कॉस्टिंग ठीक है, ग्रॉस मार्जिन भी ठीक है, एंड वी कैन जेन्युइनली ऑफर अ ग्रेट प्रोडक्ट एट 550 रुपये एमआरपी. एंड इन सम वे, इन आर नाइविटी आई विल से, हमें पता नहीं था ज़्यादा, तो हमने वो 5.5, शायद और कोई भी ब्रांड होता जिसको ज़्यादा अकल होती तो वो कम भी करता, प्राइस तो मार्केट से 20% कम करता, 800-900 में लॉन्च करता. बिकॉज हमें पता नहीं था, हमने 550 में लॉन्च कर दिया. एंड दैट प्राइस गेव अस सच, एंड शुरू में तो ब्रांड किसी को पता नहीं था, मार्केटिंग के पैसे थे नहीं, हमने तो कोविड में लॉन्च किया था. दैट प्राइस बिकेम सच अ बिग पुल दैट वेरी वेरी क्विकली दैट प्रोडक्ट स्टार्टेड स्केलिंग अप, राइट. And later on, the entire serum category, in which a lot of other brands have also done an equally good job, has got created around this 550-600 rupee price point. So the entire serum category, which was above 1,000 at some point of time, just came to half. And incidentally, we were one of the early movers in that price point, right? And now even our serums, most of the serums which are 30 ml are priced around this 550-600 rupees. Again, we got lucky, we discovered it or we learnt it, whichever way. ये प्राइस फ्रंट पे. हमारी जो पहली पैकेजिंग थी, इट वॉज वेरी वेरी गुड लुकिंग, बट इट वॉज वेरी कॉम्प्लेक्स. इट वॉज इन 2 पार्ट्स, तो फैक्ट्री को असेंबल करना पड़ता था वो. सो इट वुड टेक लाइक अ मिनट एंड हाफ फॉर अ स्किल्ड लेबर टू असेंबल दैट पैकेजिंग. एंड बन के बहुत ही बढ़िया आई थी. वी वर वेरी फैसिनेटेड विद द आउटपुट. बहुत बढ़िया फीडबैक था, अर्ली कंज्यूमर फीडबैक, यार ऐसी पैकेजिंग तो देखी नहीं है. बट वेरी क्विकली वी रियलाइज दैट एट स्केल जो मोनो कार्टन 6 से 7 रुपए का बैठना चाहिए वो 12 का पड़ रहा था, बिकॉज इट वॉज इन 2 पार्ट्स. एंड यदि हम जब स्केल कर जाएंगे, जब 25,000 यूनिट्स 50,000 यूनिट्स दिन के बनाने पड़ेंगे, तो मैनुअल लेबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. इसमें स्केलेबिलिटी का भी इशू है, एंड लेबर के चैलेंजेस अलग है, बिकॉज इसके लिए स्किल्ड लेबर चाहिए था, बिकॉज द बॉक्स ओपन इन अ वेरी पिक्यूलियर मैनर. तो हमारी पैकेजिंग भी चेंज हुई. सो जो कॉटलर 4 पीस ऑफ मार्केटिंग बताता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, मैंने 3 तो आपको गिना दिए. प्रोडक्ट फ्रंट पे हमने चेंजेस किए. प्राइस में मैंने आपको बताया कि गलती से हमने कुछ अच्छा कर दिया. पैकेजिंग तो हमारी पूरी रिवैम्प ही हो गई, द स्ट्रक्चर ऑफ पैकेजिंग विच वी हैड क्रिएटेड. एंड प्रमोशंस हैज बीन एन ऑनगोइंग थिंग. पहले हम लोग थोड़े ज़्यादा प्योरिस्ट थे कि कितना कमीशन है, कितना डिस्काउंट्स जा सकते हैं, कितने प्रमोशंस रन कर सकते हैं. Now we are a little more flexible in creating special occasions with different channel partners, saying कि कौन से occasion पे कब क्या excitement create हो रहा है, उस occasion को कैसे utilize किया जाए to offer a better deal to the consumers. So ये चारों ही front पे, which is the traditional 4 P's of marketing, काफ़ी सारी learning रही हैं. And then, you know, the other thing which has changed is from 4 P's of marketing, I think the newer concept is consumer journey. कि जब कंज्यूमर आपको डिस्कवर करता है, वहाँ से लेके जब कंज्यूमर आप ऑर्डर फुलफिल करते हो, उसके जो भी स्टेप्स हैं, सो डिस्कवरी इज ऑन मार्केट प्लेसेस और योर वेबसाइट और ऑन वन ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. उसके बाद जब वो ऑर्डर प्लेस हो रहा है, तो जो ऑर्डर प्लेसमेंट का जो प्रोसेस है कितना स्मूथ था, डिलीवरी प्रोसेस कितना स्मूथ था, डिलीवरी का कम्युनिकेशन कितना स्मूथ था, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस कैसा था, जब वो प्रोडक्ट हाथ में आया तो सेंसोरियल्स कैसे थे, प्रोडक्ट एफिकेसी थी, और प्रोडक्ट एफिकेसी होने के बाद आपने रिटेंशन जर्नी कैसे की. सो ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स, यू नो, देयर इज समथिंग टू आइटरेट एंड लर्न, एंड दैट्स द वे वी लुक एट द बिजनेस, दैट ईच ऑफ दीज पार्ट्स यू हैव टू कंटिन्यूअसली डू समथिंग बेटर देन व्हाट यू वर डूइंग इन द लास्ट क्वार्टर. आपका डिस्काउंटिंग का जो प्यूरिस्ट से जो चेंज ऑफ ओपिनियन टू व्हाट इट इज टुडे, बिकॉज आई डू सी दैट इवन ऑन योर वेबसाइट देयर आर डिस्काउंट्स दैट यू गिव नाउ टू पुश सर्टेन कैटेगरीज. I work with a lot of US brands that are absolute purists कि discount देना ही नहीं है, right? हमारे website पे या brand पे discount आ ही नहीं सकता है. What was your journey like to saying कि starting off as a purist कि ज़्यादा discount नहीं देना है, this is what the price point is, we are already pretty affordable, to what it is now, what led to that?
So I think where we worked with the partners is to realize that there are special occasions where we can drive penetration. Right? We are a very, very young brand, and it is possible that 1 or 2 years later, this strategy might change again. Right? Specifically, we have started going offline now. We have some very, very early inroads into offline. And offline का जो pricing strategy है, जो promotion strategy, it is very different from what you are able to offer online because of the kind of tools and mechanisms which are available online. So it will change again for us in future. However, what we realized was for a brand which is very early in the journey, जो typical funnel की बात सब लोग करते हैं, राइट, कि अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड परचेज या ट्रायल जो भी आप बोले, हमारा तो अवेयरनेस ही बहुत लो है, तो ट्रायल तो बहुत बाद में आता है. सो इफ वी कैन यूज सम स्पेशल ओकेजन्स टू ड्राइव ट्रायल्स एंड फाइनली द कस्टमर इज पेइंग, इट इज नॉट लाइक कि फ्री में सैंपल दे दिया हमने, दैट इज अनदर स्ट्रैटेजी, बट ये तो कस्टमर पे करके कर रहा है, देयर इज अ बेटर डील अवेलेबल ऑन स्पेशल ओकेजन्स. Then the product efficacy and the product quality has to take over to let the consumer come back and buy into the brand again across categories. And perhaps this time the discounts may not be as much because वो तो special occasions पे ही है discount. But personal care products में typically यदि product खत्म हो गया है या हो रहा है तो consumers will make a second purchase, and those repeat numbers have been looking very, very healthy for us. So because D2C also allows you a lot of insights into your cohorts, we realized that even जो customers को हमने थोड़ा deep discount करके acquire किया था, they are also coming back and buying at regular prices or at lower discounts, and which is where the confidence came in that if we move away from the purist approach a little bit here and there, it is okay. Makes sense. I want to double down on this journey of acquisition and retention. Retention specifically because I think it's a term that's not spoken about as much. Acquisition के लिए channels हैं, you can spend money on Instagram, you can do good ad, good creatives, will get you the acquisition numbers. But let's start with acquisition first. How do you look at performance marketing and brand marketing, and especially at different stages of building a brand? Initially, does one matter more than the other? As you scale, does the thing balance off? How do you look at it? So our belief, Siddharth, from the beginning has been that every brand should define what they can afford for brand marketing. Performance marketing तो देखिए सब करते ही है, तो it is a given. तो उसके बारे में किसी को कन्विंस नहीं करना पड़ता. आज पैसे डालो, रात मतलब हर घंटे पे रेवेन्यू दिखता है. It is like a drug, and hence that's something which we all get addicted to very, very quickly. बट ब्रांड का बिकॉज ROI बहुत ही लॉन्ग टर्म में दिखता है, इमीडिएट ROI नहीं दिखता है, इसलिए लॉट ऑफ अस आर वेरी स्कैर्ड, इंक्लूडिंग अस, कि यार ये खर्चा हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या है, कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, कितना करना है. सो वी जस्ट सेड दैट वी विल वेरी अर्ली इन आवर जर्नी, वी सेड ये X रुपीज X lakhs पर मंथ हमने सेट असाइड कर दिया फॉर ब्रांड. ये हम ROI नहीं मेजर करेंगे, ये हम टच नहीं करेंगे. जो भी हम मेजर कर पा रहे नहीं कर पा रहे, हमें लग रहा है इंटरनली एज अ टीम, वी विल ट्राई एंड ऑप्टिमाइज the maximum to drive awareness. And again, I go back to the funnel and try and explain how we think of what is the difference between performance marketing and brand. Performance marketing will go and attack customers who are at the bottom of the funnel, जो कि आज परचेज करने के लिए तैयार हैं. And once they have made a purchase, हम सब लोग मेटा में और गूगल में एक्सक्लूजन्स करना जानते हैं, पास्ट परचेजर्स को हम एक्सक्लूड कर देते हैं बिकॉज उन्होंने तो परचेज कर लिया है. ब्रांड मार्केटिंग इज डिफरेंट बिकॉज इट विल टारगेट अ कंज्यूमर अक्रॉस द फनल. आप नहीं जानते हो ब्रांड को तब भी टारगेट करेंगे, आप अवेयर हो बट कंसिडर नहीं कर रहे हो तब भी टारगेट करेंगे, आप कंसिडर कर रहे हो बट ट्राई नहीं किया तब भी टारगेट करेंगे, आप ट्राई करके खरीद चुके हो, आज ही खरीदा है बट कल भी आपको ऐड देखने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही है. सो इन द एंटायर फनल एंड पोस्ट परचेज ऑल्सो ब्रांड मार्केटिंग डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन टू कंज्यूमर्स. दैट्स द वे वी विल डिफाइन and different people will define it differently. Obviously, there you will try and increase reach, and not go to the same consumer beyond a point of time. Those metrics are there, but you are trying to maintain a relationship across the funnel through brand marketing. In performance marketing, you are saying, यार आज मेरे साथ खर्चा करने को तैयार हो कि नहीं. यदि आज खर्चा करने को तैयार हो तो आपको टारगेट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. यदि आप 2 महीने बाद के कंज्यूमर हो तो 2 महीने बाद देखेंगे, आप 8 महीने बाद के कंज्यूमर हो तो 8 महीने बाद देखेंगे. अभी हमको आपसे बात नहीं करनी. That's how we differentiate in the intent of where performance and brand are. At the same time, we just believe that आप brand का एक budget set aside कर दो depending upon what you can afford. उसको touch मत करो, उसको best use कर सकते हो करो. Performance तो आप brand जैसे जैसे grow करता है for a reasonably long period of time आप grow करोगे. Brand को भी आप step jumps देते रहो in terms of investments.
हमने typically जो benchmark follow किया around 10% of our top line. That is our benchmark today. When we started off, it was like 25% of our top line. But absolute amount बहुत ज़्यादा नहीं था because top line ही बहुत छोटी थी, तो 25% का बहुत ज़्यादा relevant नहीं था. But ये 10% तो हम minimum brand spends करेंगे ही. And in fact the intent is कि ये 10% को हम क्या 15 या 20 या 25% पे लेके जा सकते हैं. आप एक जो फंडामेंटल P&L डिज़ाइन यदि आप देखें फॉर द लार्जर ब्रांड जो FMCG कंपनीज हैं, उनका मार्केटिंग पे नेट सेल्स का ये फाउंडर्स भी काफ़ी बार कंफ्यूज करते हैं आपस में भी, एंड इन्वेस्टर्स डोंट हेल्प देयर. GMV, ग्रॉस सेल, नेट सेल इज जो अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट इज नेट सेल. मोस्ट ऑफ द FMCG ब्रांड्स ऑपरेट बिटवीन 10 to 15% ऑफ नेट सेल्स का स्पेंड्स ऑन मार्केटिंग. ब्यूटी में शायद 15 से 20 हो सकता है, बट 10 से 15% इज द बेंचमार्क. Most D2C brands operate between 30 to 50%, sometimes 60-70% of net sales. Because the difference is the larger brands have figured out how to use brand marketing. The D2C brands are heavily reliant on performance. And if D2C brands and digitally native brands have to move towards this 15% on the higher side, I'm saying, of net sales as marketing spends, they will have to move from performance to brand. And it is a journey. It is a journey of faith. It is a journey of learning. It is a journey of iteration. And we are nowhere close to perfecting that journey. For us also, it is very early days. हम सीख रहे हैं, बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं. Our first brand campaign bombed, the large one which we did. हम consistently तो हम करते रहे, but एक जब बड़ा bet लिया हमने 4-5 महीने पहले, वो नहीं चला. अभी फिर से हमने एक थोड़ा सा बड़ा bet लिया है जो अब लग रहा है चल रहा है, but गारंटी नहीं है क्योंकि रिजल्ट तो इमीडिएट मेजर कर नहीं सकते आप. तो पता कैसे चलता नहीं चला, राइट? बिकॉज उसमें भी मतलब क्योंकि रिजल्ट मेजर नहीं कर सकते हो, तो आप हाउ आर यू सो श्योर कि वो नहीं चला? कुछ सरोगेट्स हैं यहाँ पे सिद्धार्थ. वन इज देयर इज समथिंग कॉल्ड अ ब्रांड ट्रैक, which all the larger FMCG companies do. We also do. You can define a frequency, and ऐसा expensive है, but super expensive नहीं है. कुछ 3 से 4 लाख के बीच में करते हैं. It's a statistically significant survey. You can define which target audience, which cities, what cohort. You can do all of those. ब्रांड कैंपेन का रिजल्ट अवेयरनेस पे आना चाहिए कि ब्रांड अवेयरनेस बढ़ा के दी, राइट? लेकिन आप ब्रांड कैंपेन हर महीने तो नहीं कर सकते 3-4 लाख रुपए डाल के. आप 6 महीने में करोगे या साल भर में करोगे. एक जो दूसरा सरोगेट है विच अ लॉट ऑफ न्यू एज ब्रांड्स यूज, इसकी गूगल सर्च बढ़े के लिए. तो इसमें भी आप कैसे कर सकते हो कि जैसे हमने जब लास्ट टाइम ब्रांड कैंपेन किया था, हमने वो केवल बॉम्बे में किया, रेस्ट ऑफ इंडिया को सेपरेट आउट किया, क्योंकि एनीवे आपकी गूगल सर्चेस ब्रांड के मंथ ऑन मंथ चेंज हो रहे हैं एंड होपफुली ग्रो कर रहे हैं. इफ यू आर ग्रोइंग एज अ ब्रांड, दे ग्रोइंग. तो यदि आपने पैन इंडिया पैसा डाल दिया और यदि आपके पहले 100 सर्च आते थे, 100 से 150 हो गए, इज दैट गुड और बैड? कैसे पता? क्योंकि हो सकता है वो तो एनीवे आपके परफॉर्मेंस और बाकी रीजंस के कारण ही स्केल करने वाला था. सो देन यू सेपरेट आउट वन सिटी. That city could be a metro, or that city could be a smaller city, where that impact of that same amount of money can be seen multifold. And जैसे यदि हमारा Google searches pan India 100 से 150 गए, but so 50% increase हुआ, but बॉम्बे में if that increase was not 100% or 200%, it should have been disproportionate यदि हमने बॉम्बे में brand campaign किया. This is one of the surrogates, right? At the same time, both Google and Meta, if you're using these two platforms to drive your brand campaign, do something called a BLS या brand lift study करते हैं, जिसमें वो अवेयरनेस वो सारी चीज़ें बताते हैं. इस बार हमने जब ब्रांड, एंड थर्ड चीज़ जो है आपको शायद पता चलनी चाहिए इसमें, वो है आपका CAC धीरे धीरे कम हो रहा है. कि इफ यू डूइंग कंसिस्टेंट ब्रांड स्पेंड्स, CAC के ऊपर प्रेशर रिलीज होना चाहिए. अगेन ये ड्रामेटिक नहीं है, बट कुछ तो फर्क दिखना चाहिए. सो यू हैव टू ट्रायंगुलेट डिफरेंट सोर्सेज to figure out how to kind of arrive at something which works for you. I don't know if there is a cookie cutter approach जो हमारे लिए चला वो बाकियों के लिए चलेगा या नहीं चलेगा. Got it. So basically, one of the things that I'm hearing is, as a D2C brand, it's inevitable that you'll have to spend on brand marketing, and that comes from the founder's conviction. If you don't have that conviction, you'll be on that treadmill of performance marketing for much longer, which unfortunately also depends on the kind of cash reserves that you have, which might mean you have to go raise more money, all of those things. And if you want to build over a period of time sustainable brands, that percentage of marketing jo spend karte ho, that has to be much lesser than what new age D2C brands spend today in order to build that initial push. Absolutely. That's a good summary, Siddharth.
रिटेंशन की बात करते हैं अब, राइट? आपकी कैटेगरी जो है, एंड आई एम प्रोबेबली नॉट द राइट कंज्यूमर फॉर इट, राइट? बिकॉज मुझे तो समझने में टाइम लगता है कि ये प्रोडक्ट जो आया है वो सही है कि नहीं है, एंड इट्स माय वाइफ हु डिसाइड्स दैट दिस इज द राइट प्रोडक्ट और नॉट, राइट? बिकॉज द वैल्यू इज नॉट इमीडिएट, इट्स नॉट वन ऑफ दोज थिंग्स दैट you know put on and magically things will change. It is a deeper understanding if the product is good or not. But is it hard to figure out retention in this category? Is the consumer very price sensitive? How do you figure out retention? Double click on retention and how you look at it within Pilgrim. So before we get into retention, I just want to highlight a fact कि आज से साल भर पहले 25% of our consumers were male, and today 40% of our consumers are male. Interesting. And was this consciously done? No, this came as a surprise to us. ये Interesting. खुद से हो गया, because if you look at most of our imagery, it has always been directed towards women. In fact, Meta में तो बहुत बार हम मेल ऑडियंसेस को एक्सक्लूड कर देते थे, because we didn't have products targeted specifically for men. But we are realizing कि naturally it seems that we have appealed to a large number of men also. एक मेरा पर्सनल थीसिस वहाँ पे और भी, दिस इज नॉट द कंप्लीट थॉट बट दिस इज माय थीसिस. एज मेन वी थिंक यार ये लड़कियों के लिए अच्छा है तो हमारे लिए तो अच्छा होगा ही, लड़कियों को हमसे बेटर पता है. लाइक यू आर सेइंग यार भाई इनको बेटर पता है मुझसे. 100%, yeah. So many of their recommendations are perhaps coming from wives, sisters, mothers, and because a lot of women have perhaps liked us in our early days, we have got recommended to men saying यार तुमको स्किन केयर करना है तो पिलग्रिम ही कर लो. Correct. And I think the awareness also in the last 2-3 years, I don't know what has happened, but the awareness on skincare, like 2 साल पहले मेरे को नहीं पता था retinol क्या होता है, right? Like now I know what retinol is and how important it is as you age. So a lot more awareness around skincare. Maybe it's just me, maybe, but I guess data says that it's across the board, which is interesting to know. Yeah. Now coming to retention, so our belief is fundamentally retention. While there is a role of marketing automation, or some people call it as CRM, कि आप जो consumer journeys define कर रहे हो कैसे कर रहे हो. But उसके पहले I will go back to the overall consumer journey. Have you managed to, one, create a brand which is differentiated, create a product which is powerful, which is efficacious, and have you taken care of the entire consumer journey? तो एक मेरा और thesis है यहाँ पे. If you look at the consumer journey, the way we were defining from product discovery to your order placement, to communication before the order actually arrives, to unboxing, to product efficacy, all of that, this multi-step consumer journey, you have to do an average plus job on each of these steps. I'm not saying exceptional. I'm not saying A plus on all these steps. But B plus या A हर step पे होना पड़ेगा. कुछ steps में where as a company you are much better equipped than the other competition, A plus होना will definitely help. But if you do a C or a D job or even one step, it is a multiplication to my mind and not an addition. So if there are 10 steps in this journey, 7 into 7 into 7 into 7 is a very large number compared to 10 into 10 into 10, but बीच में एक 0 या 1 आ गया. It is not 7 plus 7 plus 7. It is 7 into 7 into 7, and hence even a 7 or 8 on all parameters and 1 or 2 parameters, 3 parameters where you can excel, 10 on 10. And you define where is your excellence as an organization. Your excellence could be operationally a बहुत strong हो. As a new brand, as a young brand, आप 24 घंटे में product deliver कर देते हो. For whatever reason, this has become a very big thing for consumers today. यार मैंने आज order किया था, शाम को मिल गया product, कल सुबह मिल गया. And younger brands, newer brands, consumers often don't expect that. आप deliver कर सकते हो तो कर दो. आपकी पैकेजिंग वाव कर सकती है क्या, आपकी अनबॉक्सिंग वाव कर सकती है क्या, आपका जो कम्युनिकेशन है जो आप प्रोडक्ट खरीदने के बाद भेज रहे हो, कैन दैट बी instead of saying hey Siddharth, your product has been shipped and you can expect it to reach you in 2 days, can you really build a relationship there? Yeah, and I think as a consumer there, striking that balance of the right level of communication, right? You sometimes order and then next 5 days WhatsApp पे message आ रहे जो irrelevant है. But there are experiences where sometimes you order and just at the right point you're getting the right information, which is seamless. You don't feel you're bombarded with messages, and getting that right is not that easy. I'm so with you, Siddharth, ki right number of messages and what is written in that message. Each of these is a brand building opportunity.
What is the tone of voice? You spoke about WhatsApp. Now the interesting thing about WhatsApp है आप images भेज सकते हो, videos भेज सकते हो, emojis भेज सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट का एजुकेशन कर सकते हो, जो भी आपकी ब्रांड को सूट करता है आपको सब बता सकते हो, अपार्ट फ्रॉम सेइंग यार आपका ऑर्डर आने वाला है 2 दिन में और ये ओटीपी है, राइट? सो दिस इज, आई एम सेइंग, नॉट लिंक्ड टू रिटेंशन इन द ट्रेडिशनल सेंस, बट दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विद द कंज्यूमर्स and hence driving retention overall. Then, obviously, once your retention journeys in the traditional sense kick in, जो RFM मॉडल सारे ही ब्रांड्स करते हैं कि रिसेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, मोनेटाइजेशन क्या था, एंड सेपरेटिंग आउट डिफरेंट कोहॉर्ट्स एंड आइडेंटिफाइंग कि यार कौन से कंज्यूमर आर हाई वैल्यू कस्टमर्स, बहुत फ्रीक्वेंटली खरीदते हैं, कौन से कस्टमर ने हमारे फेस वॉश खरीदा बट फेस वॉश 10 बार खरीद लिया, सीरम खरीद लिया बट शैम्पू ट्राई नहीं किया, और वैसे वर्सा, या फेस भी खरीदते हैं, हेयर भी खरीदते हैं बट बाथ एंड बॉडी ट्राई नहीं किया है, या अभी समर्स आ रहा है, वाइल सनस्क्रीन इज अ प्रोडक्ट विच यू शुड यूज ऑल 12 मंथ्स, इंडिया में ये अवेयरनेस अभी तक थोड़ी सी लो रही है, लोग समर्स में ही सनस्क्रीन ज़्यादा यूज़ करते हैं, टिल द टाइम दैट कंज्यूमर हैबिट डज नॉट चेंज. वन इज, कैन वी हेल्प द कंज्यूमर हैबिट चेंज, एंड इफ इट इज टेकिंग टाइम, एटलीस्ट समर्स में कैन वी टॉक अबाउट सनस्क्रीन अ लिटिल अर्लियर दैन द अदर ब्रांड्स. ये कंज्यूमर्स का डेटा तो है हमारे पास, एंड हाउ इज आर सनस्क्रीन डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. तो ये सारे रिप्लेनिशमेंट जर्नीज क्या है. यदि हमें पता है कि हमारा सिरम 45 दिन में खत्म होने वाला है, तो उसके ठीक 10 दिन पहले कैन वी सेंड देम अ नज सेइंग यार ये आपका सिरम खत्म होने वाला होगा, होपफुली यू हैव सीन द रिजल्ट्स, कैन वी सेंड यू अ रिप्लेनिशमेंट. तो बहुत ही इसमें बहुत रॉकेट साइंस नहीं भी किया तो बेसिक्स ही कर पाने में बहुत टाइम लगता है इसमें. Especially because of the number of SKUs that you have, right? Especially as a beauty brand, you have so many SKUs that will have slightly different journey. There could be a holistic journey that's across all SKUs, but they're slightly different across different SKUs. And getting that right is a lot of detail orientation, method to the madness, and perfected over a period of time. सो मैं एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा. शैम्पू हम लोग सब यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं. शैम्पू यूज़ करने का करेक्ट मेथड क्या है? शैम्पू एक्चुअली हाथ में लेके थोड़ा सा पानी लेके डाइल्यूट करना चाहिए एंड वो फिर हमें बालों में लगाना चाहिए. शैम्पू इज डिजाइन टू बी वेरी थिक, इट वर्क्स बेटर व्हेन इट इज डाइल्यूटेड, मोस्ट शैम्पूज. अभी ये यदि हमने कंज्यूमर को पहले शैम्पू जब पहुंचा है उस दिन बता दिया एंड वो डेमोन्स्ट्रेशन का वीडियो भेज दिया, बिकॉज व्हाट्सएप में आप वीडियो भेजो चाहे टेक्स्ट भेजो सेम ही कॉस्ट है. कॉस्ट है भी तो इज इट वर्थ टॉकिंग टू योर कंज्यूमर्स एंड एक्सप्लेनिंग टू देम यार आप शैम्पू ऐसे बेटर यूज कर सकते हो. फेस वॉश हम लोग बहुत लोग 10 सेकंड में वॉश ऑफ कर देते हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड 60 सेकंड फेस वॉश मेथड, विच बेसिकली सेज कि यार आप फेस वॉश को लगा के थोड़ी देर ही छोड़ो ताकि जो ऑयल डर्ट है वो बेटर निकल सके. कैन वी टॉक टू आवर कंज्यूमर्स अबाउट हाउ टू यूज द फेस वॉश इन अ राइट मेथड. बहुत कंज्यूमर्स हमें डीएम में पूछते हैं कि यार सीरम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन में क्या स्टेप पहले आएगा. तो जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आ रहे हैं, कैन वी डू एन एजुकेशन वीडियो सीरीज अराउंड दैट. एंड यदि किसी कंज्यूमर ने सीरम खरीदा है उसको तो बता ही सकते हैं कि यार सीरम कब यूज़ करना है, पहले यूज़ करना है, बाद में करना है, कौन से सीरम मॉर्निंग में यूज़ हो सकते हैं, कौन से सीरम इवनिंग में यूज़ हो सकते हैं. नॉट टू ओवर डू दिस, बट हाउ डू यू रियली demonstrate to the consumer that as a brand you care about the consumer. In a way, retention is building that connect and trust and hoping that the product quality will eventually drive the next purchase, rather than saying, hey, buy this now, right? You've already bought this, buy this now, we're 20% off if you buy this now, right? It's less of that and more of building that trust and communication with the consumer. Absolutely. And at the right time also say that 20% off. Of course. But if there is no relationship, वो 20% off is very transactional and tactical. कोई 50% off देगा बाजू वाला ब्रांड तो कंज्यूमर वहाँ स्विच कर सकता है. But if you have a deep relationship, the consumer will care about the 20% discount when you offer it. Yeah. I want to double click on the product efficacy part, especially because you're manufacturing a lot of this in India. I've spoken to D2C brands where the common question is, if I don't own manufacturing, if I'm reliant on third party manufacturers to do this, वो तो कल किसी और को भी जाके बेच सकता है, right? तो मेरा product तो मेरा रहा नहीं. How do you look at the relationship with the manufacturers? How do you get, some of these might be traditional manufacturers, how do you get them to try new formulations and be as fast as you in terms of trying new things and experimenting and then manufacturing? What has that learning been in this D2C and manufacturer relationship? Yeah. So the one learning we've had, Siddharth, is, everybody, whether they are a small manufacturer or large manufacturer, wants to be working with D2C brands.
And as a founder, it is our job to inspire confidence in saying, यार, we are the right partners to work with. Because ना सबको फोमो हो रहा है अभी कि यार ये D2C क्या बला है, ये तो बहुत बड़ी हो गई है. तो 2 साल पहले कुछ बच्चे आए थे, मैंने भगा दिया, एंड आज वो 500 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं. एंड जिस फैक्ट्री ने उनको बोला था ठीक है ट्राई करते हैं, वो फैक्ट्री की तो किस्मत बदल गई है. दिस हैज हैपेंड मल्टीपल टाइम्स इन मल्टीपल कैटेगरीज अक्रॉस सेक्टर्स. नाउ वेदर इट इज अ स्मॉल मैन्युफैक्चरर और लार्ज मैन्युफैक्चरर, एवरीबडी सेइंग यार ये D2C के साथ काम तो करना है. नाउ कौन से D2C ब्रांड से साथ काम करना है, बिकॉज मेनी ऑफ देम विल नॉट स्केल, बट सो दे ईच ऑफ देम आर टेकिंग देयर वेट. So going through, warm introductions, building a rapport with them, really demonstrating how you are a genuine founder. If you happen to get some marquee investors on board at whichever point of the journey, right? Whether कुछ known angels हैं क्या, how do you build credit? जैसे हम consumers के लिए social trust वगैरह build करते हैं, manufacturing partners के लिए भी हमें trust and credibility हमारे लिए build करनी होगी, so that they are willing, because वो भी limited number of brands के साथ ही काम कर सकते हैं. So I think one from their side there is very little resistance. They are all saying यार काम तो करना है हमें, and they're willing to make a lot of exceptions. Especially when I'm assuming the MOQs is a minimum order quantities, was the biggest pain point when you wanted to work with a manufacturer कि इतने से नीचे तो मैं बनाता ही नहीं हूँ, right? And now I'm sure that's relaxed. That's definitely relaxed. There are manufacturers which now specialize in lower MOQ products. But even if you go to the larger guys, most of them are saying यार तुम्हारे लिए ठीक है 2000-4000 यूनिट भी बना के देते. But जब तुम बड़े हो, they can see the upside कि अगर चल गया तो I have a relationship that I can scale with. Absolutely. In our case, every single partner we started our journey with, the guy who made our first set of cartons, और मैंने 2000 कार्टन छपवाए थे, he was willing to make 1000 also. He said 1.5 रुपए ज़्यादा लगेगा. Right? Today he makes probably 500,000 cartons for us every month. और फर्स्ट लॉट उसमें उसने हमारे 9 SKU थे, 9 into 2000 18,000 कार्टन बनाए थे. 500,000 carton, the same guy is making. He was capable obviously of a few million cartons even then. हमारे लिए उसने एक्सेप्शन किया था. एंड हम उसकी फैक्ट्री पे जाके जब बैठते थे, हमें शेड डिफरेंस समझ नहीं आता था कि हमारा पैंटॉन और इनका पैंटॉन मैच नहीं कर रहा है. ही यूज्ड टू से यार मजा नहीं आया. He was so particular, and that's the kind of ownership he has shown for the brand. So now it is our responsibility कि कभी उसका ऊपर नीचे हो, उसका सुख दुख हो, तो हमें भी उसके साथ खड़े रहना है. The guys who supported us in our early journey. So the second is when you speak about quality, और कि products हमारे formulations copy हो जाएंगे. So you have to build that relationship with the manufacturer to say यार हमारा जो formulation है same to same किसी और को मत दो, कुछ changes करो आप उसमें. And I think most manufacturers are willing to work with you. अब यदि आपका ब्रांड चला ही नहीं, आपका प्रोडक्ट चला ही नहीं, then he decides to offer it to other brands. I think we have to be flexible there. But fundamentally what we have to understand is it is not the product alone which is selling. It is the brand which has to sell. And the product of course has to be high quality. But यदि कोई Pilgrim के सारे manufacturers पे जाके same products manufacture करके और brand name change करके बेच ले, then we have not done a good enough job on the brand front. Then we don't have the right to exist as a brand. Makes sense, because then it's just another commodity. Correct. And उसमें फिर whatever premium you're charging, somebody is going to come and say I can do it for lesser, and it's priced to the bottom, what to the race to the bottom. Yes. Okay. Anurag, what I want to switch gears to now is आपने वो पूरी journey देखी है 0 to 1, 1 to 10, and now you're probably in the 10 to 100, right? As a D2C brand, how do things evolve on different fronts? Be it product, be it scaling issues जो आते हैं, cash flow issues जो आते हैं, which I'm assuming is a different beast altogether when you're doing 10 to 100 versus 0 to 1. Double down on some of the unique things that have changed, and how has the organization evolved? How has the brand evolved to keep up with the changes? सिद्धार्थ, तो इसमें जो सबसे important part है वो है team. And when I speak to other founders who are early in the journey, often I get a question कि यार मेरी early team कितने लोगों की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, and how does the team change with scale? So and I think we have been very, very fortunate to have a very high capability, passionate, high ownership team. So I want to touch base on that, and I want to share actual examples of how we have grown as a team. जब हम लोगों ने start किया था, हमारे team में 5 लोग थे. Me, my co-founder Gagan, and one of our early guys who now leads our D2C,
He comes from a digital marketing kind of background. We had one designer and one person in the accounts team. In fact, my belief is the first person you should hire in any team is an accounts person. And don't need a very senior person. Even an entry-level junior person is fine, because maintaining books in a clean manner is very, very important for you to run the business. And if you decide to raise funds, it is going to inspire a lot of investor confidence कि आपकी books clean तरीके से maintain हुई है. And one of the suggestions I will have is hire a entry level accounts person जिसको tally पे entries करना आता है. Work with a local CA. बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लेते वो, मैंने कि 10-15 हज़ार रुपये 20 हज़ार रुपये में आपका बुक्स ओवरसी कर देते हैं. एंड एंश्योर दैट यू आर एबल टू मेक अ गुड एमआईएस. कितनी सेल हुई है, कितना जीएसटी गया है, कितने वॉल्यूम गया है, कितना एवरेज प्राइस है, मार्केटिंग पे क्या स्पेंड है, मैन पावर क्या है, वो CM1 CM2 एबिटा जो टिपिकल फॉर्मेट VCs फॉलो करते हैं. लर्न विद समबडी हुज ऑलरेडी बीन देयर. एंड एक अकाउंट सबसे पहला ये, मतलब इफ दे आर जस्ट 2 co-founders, आई एम अज्यूमिंग देयर आर 2 co-founders, first person is accounts, the second person is a graphic design person. बिकॉज आपकी सारी जर्नी जो पैकेजिंग की है, वेबसाइट में जो बैनर्स जाने हैं, सोशल मीडिया पे बैनर्स जाना है, प्रोडक्ट पेजेस पे जो इमेजेस जानी है, ग्राफिक डिजाइन इज द नेक्स्ट पर्सन यू शुड हायर. काफ़ी सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हो, फ्रीलांसर्स के थ्रू कर सकते हो. Fiverr.com इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस. हमने बहुत सारा काम फाइवर से कराया है. फिर फाइवर प्रो भी है अभी. तो फाइवर में लेवल 1 लेवल 2 आपको फ्रीलांसर्स मिलते हैं. मैंने पाकिस्तान और बांग्लादेश के बहुत सारे फ्रीलांसर्स के साथ काम किया है. उनको इंग्लिश हिंदी समझ आती है. इंडिया से भी सस्ता है. इंडिया एनीवे काफ़ी कॉम्पिटिटिव है प्राइसिंग में. बट यूरोपियन जो डिज़ाइनर्स हैं, यूरोपियन सोशल मीडिया वाले थोड़े से हमारे लिए कभी कभी महंगे हो जाते हैं. बट पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे वेरी हाई क्वालिटी टैलेंट आई हैव फाउंड, स्पेशली ऑन ग्राफिक डिज़ाइन, कॉन्टेंट, सम ऑफ दीज थिंग्स. सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, शॉपिफाई में आपको वेबसाइट बनानी, कोडिंग वोडिंग के लिए बहुत अच्छा टैलेंट मिल जाता है एट कॉस्ट विच आर अनबिलीवेबल. इंडिया में फ्रीलांसर्स मिलेंगे नहीं उस कॉस्ट पे, क्योंकि हम लोग नेटवर्क के थ्रू खोजते हैं. फाइवर के थ्रू मिल गया तो बात अलग है. सो ये फर्स्ट, एंड ये 4-5 लोगों की हमारी अर्ली टीम थी. एंड दिस टीम वी वर एबल टू गो फ्रॉम 0 to 1. इंसिडेंटली इट सो हैपेंड कि हमारी टीम में ऑलरेडी बिटवीन मी एंड गगन, वी हैड सम ब्रांड एक्सपीरियंस, सम प्रोडक्ट एक्सपीरियंस. नहीं तो ये कैपेबिलिटीज आपको देखनी पड़ेंगी. As we started growing, our team grew from 5 to 10 people. जहाँ पे again, and many of these people who were coming on board were generalists. Yeah, they did not have a very deep expertise of, a marketplace or a D2C. All of these capabilities we built over a period of time. As we kept growing, I think the one change which happened was slowly we started hiring more and more specialists. Earlier we were hiring only for, aptitude and attitude. Now we hire for aptitude, attitude, and technical capabilities, because the roles are becoming very, very sharp. In fact, some of our early team members, when they had to transition into a specialist role, they were a little uncomfortable, saying, "यार अभी तो सब करते थे, मजा आता था, अभी एक ही चीज करने मिलेगी." But they realized that with scale 2-3 चीजें कर पाना, पहले तो 5 चीजें कर रहे थे, फिर 2 कर रहे थे, 3 कर रहे थे, वो टाइम था ही नहीं, bandwidth था ही नहीं, because each of those responsibilities was taking up a lot of time and bandwidth. Then slowly they moved to specialist role themselves and evolved as people. And now at the scale at which we are, now very, very senior industry level, experts are joining us as a part of the leadership team. So we have a CMO who comes with like 20 years of brand experience. We have a CVO who comes with 12-13 years of offline experience. Our head of finance is a chartered accountant and an SPJ and MBA. Again, 12-13 years of experience. So now at our current scale, the leadership has started joining. Otherwise, till 6 months back, we had nobody in the leadership team. But we had a very high quality mid-management and a manager team. So if you look at the scale of the team today, we have a team of close to 60 odd people. 5-6 people at the leadership level, around 15 people at the manager level, and a team of 40-45 people at the team level, which supports the managers in different functions. Got it. In terms of acquisition, in terms of positioning, do things evolve when you're scaling, or is it more of what you've learned from, all the iterations and focusing on what works and what doesn't work, or is there fundamental changes that happen along the way? Yeah, I think there are a lot of changes which happen along the way, and I'll give you an example which might be easier to relate to. So, pehle, a lot of our growth in the early days, 0 to 1 and 1 to 10 journey was driven by NPD.
And I'll give some numbers to give a flavor of what I'm talking about. NPD is? New product development. Okay. राइट. सो पहले यदि हमारे पास 10 SKU थे, हर SKU की 2000 यूनिट बिकते थे एवरेज. 20,000 यूनिट्स हम हर मंथ बेच रहे थे. देन व्हेन वी बिकेम 40 प्रोडक्ट्स इनटू 2000, 80,000 यूनिट्स बेच रहे थे. अभी यदि हमें 80,000 यूनिट्स पर मंथ से 2 लाख यूनिट्स पर मंथ पे जाना था, तो वन रूट वाज टू से 1,20,000 न्यू यूनिट्स बेचने. हमारा एवरेज SKU 2000 बिकता है, तो 60 नए SKU लॉन्च कर देते हैं. which can be very challenging to do at scale. Which can be very challenging to do, but let's say वो भी आपने कर लिया. अब आपको 2 लाख यूनिट से 10 लाख यूनिट्स पे जाना है, तो क्या आप फिर से 400 SKU ऐड करोगे जो 200 यूनिट 2000 यूनिट्स बेचने वाले हर मंथ? ये तो वायबल ही नहीं है. हाँ. अब आपको चाहिए वो SKUs जो कि 1 लाख यूनिट पर मंथ बिकेंगे, जो कुछ महीने कुछ क्वार्टर्स पहले आपके पूरे ब्रांड का स्केल था, या 50,000 यूनिट्स पर मंथ बिकेंगे. दिस रिक्वायर्स अ फंडामेंटल शिफ्ट इन द माइंडसेट ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. पहले मैं NPD की बात कर रहा हूँ बिकॉज इनोवेशन इज अ की पार्ट ऑफ आवर DNA ऑफ द ब्रांड. हमारा इनोवेशन वाज ड्रिवन अ लॉट बाय नया क्या कर रहे हैं, मार्केट में नहीं होना चाहिए, तहलका मचा देंगे, पाथ ब्रेकिंग काम करेंगे जो किसी ने नहीं किया है. तो हम नई कैटेगरीज, हमने लिप पील करके प्रोडक्ट लॉन्च किया, काफ़ी अच्छा बेचते हैं हम, बट वो कैटेगरी नहीं है. तो वो 1 लाख यूनिट पर मंथ जाने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा. बट यदि हमने सनस्क्रीन में कोई इनोवेशन किया एंड फोड़ दिया वहाँ पे, तो 1 लाख यूनिट जाने का, या शैम्पू या फेस वॉश, विच आर वेरी वेरी लार्ज कैटेगरीज, जाने की एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी तो है. बिल्कुल नई कैटेगरी आप लॉन्च करोगे, वो कैटेगरी बिल्ड होने में टाइम लगता है until unless you pump disproportionate amounts of money. सो ये जो थॉट प्रोसेस है कि आप NPD से, मैं NPD के एग्जांपल ले रहा हूँ बिकॉज देन NPD हैज टू बी सपोर्टेड विद परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड ब्रांड. कि आप कौन से SKU के पहले हम लोग स्प्रेड करके सारे, सो परफॉर्मेंस मार्केटिंग हम 50 SKU के ऊपर लगा देते थे, 20 SKU के ऊपर लगा देते थे, क्योंकि हर एक को 2,000 यूनिट बेचना है. अब हम बोल रहे हैं यार 5 SKU को हमें 50,000 यूनिट बेचना है, तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग का स्टाइल बदल रहा है, ब्रांड का स्टाइल बदल रहा है. पहले हम लोग हर महीने 10% ग्रो करने की कोशिश करते थे, अब हम बोल रहे हैं हर महीने 10% ग्रो करना मुश्किल है, बट शायद हर 3 से 4 महीने में 30% एक बार बड़ा जंप ले सकते हैं, स्टेप जंप. फिर उसके एक दो महीना स्टेबलाइज करेंगे, फिर स्टेप जंप. एंड दिस इज द करंट थॉट प्रोसेस, दिस कुड चेंज अगेन. सो एवरी पार्ट ऑफ द, पहले अकाउंट्स की आप बात करें तो पहले हम लोग बहुत बेसिक MIS बनाते थे, अब हमारी MIS काफ़ी इन्वॉल्व है. नाउ वी हैव क्रॉस्ड अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, so there's something called an IFC compliance which is now applicable. Last year हमारा पहली बार Big 4 audit हुआ, KPMG audited our books. So the way KPMG or any of the Big 4 guys look at the audit is very very different from the way your local CA looks at the audit. हमारी अकाउंट्स की टीम 3 महीने सोई नहीं, 7 दिन 12 घंटे बेचारे काम कर रहे थे. एंड we have learned a lot from that process and tried to incorporate a lot of changes in the way the accounts are maintained. तो ये every department really changes the shape, the way that department of the way the function works. Yeah. And one part of scaling is also the omni-channel strategy that you're getting into, right? If you can double click on as a digital first brand, which is used to a lot more iteration, experimentation जो आप online कर सकते हो, suddenly omni-channel is a different beast altogether. How do you deal with that? Is there a separate team that you need with people who have experience in the omni-channel? Because those people are working, that the omni-channel has been working for years now and they have a set way of working. So you can't really disrupt too much there, I'm assuming. Tell us, how are you tackling the omni-channel problem? Because you're just getting into it now, so I'm sure it's fresh. Yeah, I think, depending upon what the brand's aspiration are, the omni-channel strategy can vary. यदि आपको 300, 400, 500 करोड़ का भी ब्रांड ऑनलाइन बनाना है, that is a very doable thing these days. खासकर ब्यूटी कैटेगरी में तो 400-500 करोड़ का ब्रांड ओनली ऑनलाइन बन सकता है एंड इट कैन कंटिन्यू टू ग्रो एट 20-25% ईयर ऑन ईयर. बट इफ द एस्पिरेशन इज टू बिल्ड 1,000 करोड़ ब्रांड, 2,000 करोड़ ब्रांड और अ लार्जर ब्रांड, आई डोंट नो इफ इट कैन बी डन easily with a single brand online alone. And our aspiration is to look at a larger scale with time, and hence we have decided to say कि यार ऑफलाइन भी जाएंगे. इंडिया में आज भी most categories 95% sales is offline. ब्यूटी में थोड़ा सा ऑनलाइन का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, शायद 15% के आसपास ऑनलाइन होता है, तो 85% फिर भी ऑफलाइन है. सो डिपेंडिंग अपॉन वेयर द ब्रांड्स एस्पिरेशन आर एंड आर यू
Or do you already have products which are offline suitable? And do you have products, or will you build products which are offline suitable? Because the requirements of online and offline can be slightly different on many counts. And मैं ब्यूटी का एग्जांपल देता हूँ. ऑफलाइन में टिपिकल शैम्पू का जो वॉल्यूम होता है 80 ml to 100 ml होता है. ऑनलाइन टिपिकल जो पैक साइज होता है 200 ml तो कम से कम है. 250, 300, 400 ml भी बिक जाता है. So the economics of how delivery charges work, how COD charges work online and offline are slightly different, and the pack sizes which get retailed and depending upon what channel you are choosing. So there's a certain way we have looked at. आप बात कर रहे थे कि disruption की and so we will continue to do all the innovation we were talking about. वो हम सब online करते रहेंगे. So think of it like a graduation ceremony. जो बच्चा 10th 12th पास हो जाएगा वो कॉलेज जाएगा. जो कॉलेज पास हो जाएगा वो पोस्ट ग्रेजुएट करेगा. राइट तो ये क्लास 12 तक की पढ़ाई ऑनलाइन है. उसके बाद जो हम जिसको बीए काउंटर्स बोलते हैं, जहाँ पे देयर इज अ सेल्स गर्ल प्रेजेंट टू एजुकेट द कस्टमर, वो कॉलेज है. बिकॉज स्टिल अ लॉट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन कैन हैपन, 1-to-1 सेलिंग कैन हैपन. वहाँ पे पूरी अलमीरा, हमें पूरा शेल्फ 4-5 शेल्फ मिलते हैं टू डू अ लार्जर एसक्यू स्टॉक अप, वो कॉलेज है. बट यदि हमें पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी करना है, दैट इज जीटी, नॉन असिस्टेड, जिसको हम किराना दुकान बोलते हैं. वहां पे 1, 2 या 3 एसक्यू भी ऑन द हायर साइड ही जा सकते हैं. करेक्ट. सो स्पेस कंस्ट्रेंट है वहां पर, तो स्पेस कंस्ट्रेंट है. डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत मेहनत लगने वाली है. वहां पे प्रोडक्ट डिस्कवरी नहीं हो सकती है, प्रोडक्ट फुलफिलमेंट हो सकता है केवल. तो कस्टमर को आके मांगना चाहिए कि पिलग्रिम का रेड वाइन फेस वॉश चाहिए, नहीं तो वो माल वापस आएगा. करेक्ट. और वो माल तो वापस आएगा ही आएगा. देन द ट्रस्ट इन द ब्रांड, इन द डिस्ट्रीब्यूटर, इन द किराना इज कि कुछ भी नहीं बिकता इनका. करेक्ट. वो आप एक बार प्लेस कर दोगे, उसके बाद पैसे भी फंसेंगे, माल भी वापस आएगा एंड ब्रांड नेम भी खराब होगा मार्केट में कि यार ये तो बिकता नहीं है. सो यदि आपको पोस्ट ग्रेजुएट कराना है बच्चे को, तो पहले स्कूल में अच्छे मार्क्स से पास होना चाहिए, फिर कॉलेज में अच्छे मार्क्स से पास होना चाहिए. इट शुड हैव द पोटेंशियल टू डू अ पोस्ट ग्रेजुएट एंड द काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू बिल्ड इन टर्म्स ऑफ ब्रांड स्ट्रेंथ. जो हम परफॉर्मेंस टू ब्रांड की शिफ्ट की बात कर रहे थे, दे आर वेरी वेरी डिफरेंट. वी आर नोवेल क्लोज टू दैट. अभी तो अब स्कूल में ही है, धीरे धीरे कुछ बच्चों को कॉलेज में भेज रहे हैं. बाद में ये जो बच्चे कॉलेज से निकलेंगे फिर उनको देखेंगे किसको पोस्ट ग्रेजुएशन के भेज सकते. Makes sense. Anurag, I'm going to close it out with one question. This is something that I have looked into. I'm generally interested in also. When it comes to capitalization of D2C brands, right? There's obviously investment that's required to scale a brand. Is D2C a typically जो venture capital returns जो देखा जाता है industry में, right? Which has happened because of software where the marginal cost of scaling is not that high. In my mind, D2C, because the product needs to be built, the marketing needs to be built. What is the right kind of capitalization strategy for a brand, for a D2C brand? Because in my mind, going through that, the whole VC series A, B, C, D, E might not result in that kind of return that the VC is looking for. Is that something? I'm assuming you've obviously gone through this journey, and I'd love to understand from you. Yeah. So Siddharth, the first thing is D2C is one of those places where it is absolutely possible to build a bootstrap brand. So it's a very personal choice the founder has to make early on, because एक बार आप फंडिंग जर्नी में निकल गए तब ब्रेक लगाना कई बार मुश्किल हो जाता है. तब भी पॉसिबल है, तब भी बिल्कुल 100% पॉसिबल है. बट शायद टेक बिजनेसेस में जहाँ पे मोनेटाइजेशन बहुत लेट होता है, ये ऑप्शन ही नहीं होता है. करेक्ट. So if you are building a Google or a Facebook or many other such innovative companies which now make tons of money, for a fairly long period of time they didn't make money, and they were sustainable businesses. It's not that they were not large businesses. Correct. So D2C is one place which allows you the opportunity to not raise a single rupee from anybody and just build the business a little more slowly, a lot more frugally, and be profitable from year 2. Incidentally, the first year of our sales, first year of our existence, we did not have any sales because 6-8 महीने का existence था, product launch भी नहीं हुआ था. But the first year of our sales, we broke even at the company level. Right? At the same time, our tech kind of returns possible. I'll just share an example from where we are, from our angel investors who invested pre-revenue to where we are today. They are at a 30x in a 3.5 year journey. Right? So 3.5 साल में 30x, and hopefully we continue to do well from here on. And this, we are not alone. There are
other examples of where people have made 50x, 100x, 200x also in D2C brands. That may or may not be the typical outcome of a D2C brand, but ये typical outcome तो tech firms में भी नहीं होता है. Right, I of think, course. I think where D2C firms will typically be slightly different from tech, VC investments is थोड़ा patience ज़्यादा चाहिए इसमें. इसमें disproportionate पैसा burn करके बहुत ज़्यादा fast grow करने का फायदा नहीं है. Right. So you raise limited amount of capital, make the most of it before you decide to raise the next. And I'm assuming M&A and private equity is a much more active participant in this entire ecosystem than probably in tech, as we've seen it in the last few years. Because we've seen so many FMCG companies end up buying D2C brands, right? I'm assuming that's going to be much more active in the coming years versus what we've seen in tech. Yeah, so obviously M&A and private equity both are options, but that is possible usually at a little bit higher scale. In the early days, getting strategic Of course. investment may not be advisable because strategics will have their own way of looking at things. As a founder, then many founders do not want want the freedom to execute the way they would. Double click on that. I think you're hitting a right point on strategics having their own perspective on why they're investing, right? Because they have an external motivation, which is not capital returns per se, which is what general, independent investors would have. How can that affect a founder who's trying to build? See, one is any large company, typically when they are investing in a D2C brand, while there is a financial motivation, one of the other motivations they have is what are the capabilities they can acquire by investing in this company? What is it that they can learn? A company which is already at a market capitalization of 20,000, 30,000, 50,000 crores, वो 50, 200, 500 करोड़ का एक्विजिशन करके क्या उनका चेंज होगा? जो लिस्टेड कंपनी है उनका कुछ नहीं मिलने वाला. That is the reality. However, they're still taking some of those bets because they are saying, one, can we offer you omnichannel and make this 500 crore, 300 crore acquisition today to a 5,000 crore, at which scale becomes meaningful for them. And that is one space they understand very, very well, right? But offline comes with its own set of complications. So as a founder, are you ready to take that journey? Because digital brands have a very different DNA, offline brands have a very different DNA. And we discuss some of those. The second is this innovation cycle, the quick innovation which D2C brands are able to do, the growth hacking, digital skills, which are very densely available in any D2C brand amongst the team members, are typically not as strong within a legacy company. So they're also looking to acquire those skills so that some of their older brands can benefit from those skills. Correct. So, a mindset marriage is very critical. Understanding the expectations of the strategic is very important if a founder is trying to explore that route. Yeah. I've visited so many online websites of these FMCG legacy brands, and you can see they don't get it. They just don't get it, right? क्योंकि I have no idea कैसे कौन खरीद रहा है उस पे कौन बेच रहा है, but they're on Shopify Plus. They're spending money there because anything below that will not make sense to them. But the website is just not optimized at all. Yeah. All right, Anurag, thank you so much. I think this was a very deep conversation about your journey of building Pilgrim. Thank you so much for being so candid, across the different touch points in the discussion that we had. We wish you all the best. I have just one request for people who might want to get in touch with you, either for a role at Pilgrim or they want to learn from you. Can they reach out to you on their email? And if so, I'll link it in the comments and show notes. No, thank you so much, Siddharth. Some of the questions were very, very deep and made me think twice before I answered. So been a pleasure interacting with you, and I'm always available for anybody who wants to reach out to me. I'm available on LinkedIn, and my email ID is anurag@discoverpilgrim.com. So anybody who would reach out to me, I will ensure that I respond to all the emails which I get. Perfect. Thank you so much. Thank you so much, Anurag.